Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your GK class. I, Aanchal Singh, welcoming you all once again to your GK class. So students, as you know that we have already started with the revision part of our GK syllabus, and now we are on unit 2. Okay, so in unit 2 we have already done 3 of chapters, and today we are going to start with the new topic, actually with the next topic of our revision, that is given at page number 43, whom to consult. Okay, so class, kindly open your books at page number 43, that is whom to consult. I'll just write on the topic, that is whom to consult, given at page number 43, whom to consult. So what is the meaning of the topic whom to consult? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा कि अगर हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो हमें किस डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए. देखिए, आप कहोगे मैम हमें कुछ भी परेशानी होती है तो हम डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, बट यू नो दैट देयर आर स्पेशलिस्ट डॉक्टर फॉर एवरी डिजीज. मतलब एवरी डिजीज, मोस्ट ऑफ द डिजीजेस, जैसे कि हर पर्टिकुलर जो हमारी का बॉडी का जो पार्ट है उसके लिए खुद अलग से स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं. जैसे कि अगर इफ समवन इज हैविंग द हार्ट प्रॉब्लम, दे विल विजिट टू अ हार्ट सर्जन, ओके, और टू द कार्डियोलॉजिस्ट. Okay, and if someone is having toothache or tooth problems, then they will go to the dentist. So there are different doctors, okay, they have been specialized in their field. So ये नहीं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी, दांत में दर्द हो रहा है, then you can go to the cardiologist और वो आपको इलाज कर देगा. नो, so that मतलब कहते हैं ना, जो बीमारी है उसी के डॉक्टर के पास उसी का इलाज करवाने के लिए जाएंगे. जेन्युइन बात है. मोस्टली इन दिस आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं जब स्पेशली, तो अगर उनको किसी पर्टिकुलर टाइप का कोई डिजीज है, जैसे समवन इज हैविंग द स्किन प्रॉब्लम, तो वो स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे. ओके, तो हर डिजीज के अपने कुछ स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं जो कि उसी फील्ड में स्पेशलाइज्ड होते हैं. ओके, इफ समवन इज फेसिंग द सिवियर कफ एंड कोल्ड प्रॉब्लम, जिसको कफ एंड कोल्ड बहुत ज्यादा रहता है, तो वो कहते हैं ना ईएनटी के डॉक्टर के पास जाएंगे. ईएनटी मीन्स ईयर, टंग एंड नोज. सो ईएनटी डॉक्टर्स के पास जाएंगे बिकॉज दे आर स्पेशलाइज इन दैट. ओके, सो वैसे ही हर चीज के लिए स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं. ओके, सो इन दिस the topic is whom to consult, that from whom we should consult for if you are having any kind of problem. So heading is identify the kind of doctor whom you will consult if you have a problem with these body parts. So in this we are going to identify the doctors, so to whom we are going to consult if we are having problem in particular body parts. Starting with the first one, you have severe pain in your leg and your mouth thinks your mother thinks you have severe pain in your legs and your mother thinks you have broken one of your bone while playing football. Okay, so वो कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत ही सीवियर पेन है. सीवियर पेन मीन्स अनबियरेबल पेन, जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, दैट इज नोन एज द सीवियर पेन. सो इन दिस इट इज गिवन दैट यू आर हैविंग एनी सीवियर पेन इन योर लेग्स, तो आपके पैरों में बहुत ज्यादा दर्द है, यू कांट बियर द पेन, एंड योर मदर थिंक्स कि आपकी मम्मी को लगता है कि आपने अपने पैर की कोई भी हड्डी तोड़ दी है. ओके, वाइल प्लेइंग द फुटबॉल, जब भी आप फुटबॉल खेल रहे थे, यू जस्ट फॉलन डाउन एंड यू हैव ब्रोकन योर बोन ऑफ लेग. ओके, लेग की, पैर की एक आपने हड्डी तोड़ दी है. सो whom you are going to consult. Now you have a problem with your bones. Okay, so whom you are going to consult? You are going to consult the orthopedic surgeon. Okay, so आपने सुना होगा ऑर्थो डॉक्टर, स्पेशली शॉर्ट जो टर्म्स हम लोग सुनते हैं ऑर्थो बोला था कि अगर किसी को कोई बोन की प्रॉब्लम है या किसी की हड्डी टूट गई है, सो दे वेंट टू द ऑर्थो डॉक्टर्स आर द डॉक्टर्स हु कंसल्ट और हु ट्रीट द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द बोन्स.
Okay, so if you are having any problem with your bones, and then they are going to consult to the orthopedic surgeon. Okay, so the bone problem, we are going to consult orthopedic surgeon. So that is the answer number 1. Ortho, orthopedic, PAEDIC, surgeon, SURGEON, orthopedic surgeon. So if someone is having problem with their bones, they are going to consult the orthopedic surgeon. Okay. Next is the beep one, second one. You find it difficult to read what the teacher writes on the board, and the teacher has asked you to consult a doctor. Okay, now you are facing any problem regarding your eyes. Okay, so suppose you now तो you are in the houses, but in the school आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे हैं, वो उठ के आते हैं मैम के पास कि मैम ये क्या लिखा है, व्हाट इज इट, क्या लिखा हुआ है, तो बार बार उठ के आके पूछते हैं टीचर से कि मैम इसका क्या मतलब है, यहाँ पे क्या लिखा है. सो दैट मीन्स दे आर नॉट, मतलब अदर स्टूडेंट्स आर एबल टू सी दैट वर्ड, but 1 or 2 child in the class, they are sometimes it happens that they are not able to see. Okay, वो आते हैं आपसे मैम ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है. So that means that particular child is facing some problem with his eyes. ओके, सो मतलब उसको देखने में प्रॉब्लम हो रही है बोर्ड पे, तो वो क्या करता है, बार बार आगे आके पूछता है. अगर वो अपनी सीट पे खड़े होकर देखता है तो उसको वो चीज, वो वर्ड्स हैं जो क्लियर विजिबल नहीं हो रहा है. सो ओके, द टीचर ऑब्जर्व दैट डेली ही द सेम चाइल्ड इज कमिंग टू हर और हिम and asking the same question at what is written here, what it means, not what it means, what is written here, what is the word here. So that means that child is having problem with his eyes. Okay, so the teacher asked him that go and consult. Okay, teacher calls her parents and him or her parents and tell them that your child is facing some problem with his eyes, so kindly take him to a doctor. ओके, सो आप बार बार वो बच्चा को प्रॉब्लम हो रही है इसमें, तो टीचर ने उसके मम्मी पापा को फोन किया एंड उसके मम्मी पापा को बोला कि आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, वो बार बार बोर्ड पे दूर से नहीं देख पाता, तो दैट मीन उसको अपनी आईज में कुछ प्रॉब्लम है, उसकी आई साइट वीक हो सकती है. ओके, सो प्लीज टेक हिम टू अ डॉक्टर. आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाइए. सो नाउ द चाइल्ड इज फेसिंग द प्रॉब्लम विद हिज आईज. सो विच डॉक्टर आर दे गोइंग टू कंसल्ट? आर दे गोइंग टू कंसल्ट अ फिजिशियन? Are they going to consult a dentist? To whom? Okay, so that means they are going to consult a doctor who is specialized with the eye problems, जिसको eye problem में specialized हो, मतलब जो eye problems को deal करता हो. So that means that doctor is ophthalmologist, that is ophthalmologist, जिसको हम eye specialist को क्या बोलते हैं? We call them ophthalmologist. Ophthalmologist. Okay, so these are the doctors that deal with the problem with the eyes. Okay, if someone is having the problem with the eyes, they are not able to see clearly, or whether they are not able to understand the word what is written here, and rest of the class is able to hear. कई हमने देखा होगा, कई लोग कहते हैं ना हमारी दूर की नजर कमजोर है, पास की नजर कमजोर है. So that means they are facing the problem with their eyes. Some of the students, they wear the specs. ओके, कई बच्चे हैं जो स्पेक्स भी पहनते हैं क्लास में. सो दैट मीन्स दे हैव वेयर द स्पेक्स विद आफ्टर कंसल्टिंग टू अ डॉक्टर. तो वो उन्होंने जो स्पेक्स पहनी है वो किसी डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद पहनी है. सो व्हाट हु इज दैट डॉक्टर? सो दैट डॉक्टर इज स्पेशलाइज्ड विद द आईज प्रॉब्लम एंड द डॉक्टर इज ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट. सो दैट डॉक्टर इज ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट. ओके, सो दिस इज द सेकंड वन. OPHTHAMOLOGist, ophthalmologist. Okay, so if the doctor, if someone is facing any problems regarding his eyes or her eyes, they will go to the ophthalmologist, because these doctors are specialized with the eyes problem. So they deal with the problem if someone is having with their eyes. Okay, so that is
ophthalmologist. Moving next to the third one. You have crooked teeth. Which doctor will you consult? Okay. Suppose you are having crooked teeth. मतलब आप कहीं भाग रहे हैं और आप भागते भागते you just fell down and you have broken one of your teeth. ठीक है. और you are facing any problem if you are having pains in your jaw, in your teeth. Okay. कई बच्चों के दांतों में कहते हैं ना जब एग्जैक्ट से चॉकलेट और मीठा ज़्यादा खाने से कीड़ा ब्लैक कलर का हो जाता है दांत भी. सो दैट मीन्स दे आर फेसिंग प्रॉब्लम विद देयर टीथ. तो टू whom they are going to consult? So देखिए in the normal language we call them dentist. But in the scientific term, what is their actual name? The actual name is orthodontist. They're actually known as orthodontist, but we commonly call them dentist. Okay. So if someone is having problem with his teeth or jaw, or suppose you have went somewhere or because you are running and suddenly you fell and you have just crooked your teeth, मतलब आपका teeth कहीं बीच से टूट गया. Okay. And कई बार सडनली क्या होता है कि you are started having pains in your jaw, starting having pain in your teeth, and some have bleeding gums. Bleeding gums mean दांतों में से किसी को कोई किसी तरह का खून आना शुरू हो जाता है. Okay. And if you are not मतलब आप डेली ब्रश नहीं, if you didn't do the brush daily, अगर आप डेली ब्रश नहीं करते हो, so this is also one of the reason that may be possible you must lose your teeth. आपके सारे के सारे दांत झड़ जाएं, गिर जाएं, टूट जाएं. ओके. इफ यू डिडंट ब्रश डेली, अगर आप डेली ब्रश नहीं करोगे. ओके. सो देयर सेवरल रीजंस फ्रॉम विच मतलब आपकी जो दांतों की प्रॉब्लम हो सकती है. सो इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग योर टीथ, टू whom you are going to consult? So if you are having any problem with your teeth, you are going to consult a orthodontist. In the normal language we call them dentist, but it is orthodontist. It is orthodontist. That is the answer of third one. Orthodontist. O-R-T-H-O. Orthodontist. D-O-N-T-I-S-T. If someone is having problem with their teeth, jaw and gums, they are going to book an appointment with the orthodontist. So the next time when you visit to a dentist, जिसको आप बोलते, don't call them as a dentist, call it as a orthodontist. Okay. Now moving next to the fourth one. Your father has red rashes on his skin. Okay. The next is that you suppose your father is having any kind of skin problem. I'm not talking about your father, let's forget about it. Okay. Suppose someone is having any problem with their skin, कि उनको कई बार होता है कि खुजली हो जाती है, कई बार सडनली रैशेज हो जाते हैं बॉडी के ऊपर. सो दैट मीन्स दे आर फेसिंग प्रॉब्लम विद देयर स्किन. तो इट कैन बी ऑन द एनी पार्ट ऑफ द स्किन. स्किन के किसी भी पार्ट पे हो सकता है, चाहे वो फेस के ऊपर हो, हैंड्स के ऊपर हो, लेग्स के ऊपर, बैक, कहीं भी. सो इट कैन बी एनीवेयर. सो इफ समवन इज फेसिंग प्रॉब्लम विद rashes on their body or any problem on their skin, they are going to consult a dermatologist. They are going to consult a dermatologist. Okay. So dermatologists are the doctors that are specialized with the problems of skin. Okay. So they deal with the problems of skin. अगर किसी को कोई skin की problem है, ठीक है, skin की problem है, जो skin है हमारी body की. Okay. If someone is having any problem of the skin, they are going to consult a dermatologist. तो वो dermatologist के पास जाएंगे and they will give their treatments. Okay. So any problem of the skin will be treated by the dermatologist only. Okay. So this is the answer of the fourth one, that is dermatologist. DERMATOLOGIST. डर्माटोलॉजिस्ट. ओके. डर्माटोलॉजिस्ट का नाम देखिए, आपने सुना होगा डर्मिकूल पाउडर, एड देखते होगे टीवी पे. ओके. सो कहते हैं डर्मी, आई एम ऑसम, ठंडे ठंडे डर्मिकूल का. सो दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट द
डर्मिकूल तो पाउडर है दैट वी यूज ऑन आवर स्किन. कभी आपने कभी खाया? नो, वी यूज पाउडर ऑन आवर स्किन. सो दैट मीन्स डर्मेटोलॉजिस्ट से ही वो नाम लिया गया है डर्मिकूल. ओके, सो we are going to consult a dermatologist if you are facing any problem regarding your skin. The next one is the fifth one. The fifth question is, your grandfather often complains of extreme tiredness and discomfort in his chest. Okay, suppose someone is facing very problem of regarding they are having extreme tiredness, मतलब हद से ज़्यादा उनको थकावट महसूस होती रहती है, चाहे वो चलें या ना चले, चाहे वो कोई काम करें या ना करें. ओके, और डिस्कम्फर्ट इन द चेस्ट, चेस्ट में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम उनको फेस करते हैं वो. सो दैट मीन्स दे आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द चेस्ट. तो उनकी चेस्ट में कोई प्रॉब्लम है. So they have to consult a cardiologist. So they have to consult a cardiologist. Okay, so if someone is facing a problem regarding their chest, उनके जैसे जिनको चेस्ट की हार्ट हो प्रॉब्लम हो, तो अगर किसी को चेस्ट में कोई प्रॉब्लम है, ओके, सडनली दे फील टायर्डनेस, सडनली दे फील स्टार्टिंग फीलिंग अनइजीनेस, अनइजी मतलब बेचैनी उनको होने लग जाए. ओके, और कहीं भी जैसे ना कि मतलब दे आर नॉट एबल टू ब्रीथ समटाइम, सो दैट मीन्स दे आर फेसिंग प्रॉब्लम विद देयर चेस्ट. ओके, सो इन दैट केस दे आर गोइंग टू कंसल्ट अ cardiologist. They are going to consult a cardiologist. Okay, that is cardiologist. So cardiologists, they are expert with the problems of chest. Okay, so they deal with the problems of chest. Cardiologist, they deal with the problem of chest. Okay, so these are the various doctors, special doctors that deal with the special diseases. Okay, so the particular diseases actually. Okay, so let's revise it one more time. The first one is orthopedic surgeon. Orthopedic surgeon, if someone is having the problem with their bones, if someone has broken their bones, they are going to consult a orthopedic surgeon. Next is ophthalmologist. Who is ophthalmologist? Ophthalmologists are the doctors that you are going to consult if you are having problem with your eyes. Okay, if someone is having problem with their eyes, they are not able to see clearly, they are not able to मतलब उनको वर्ड्स की पहचान नहीं हो रही है, so that means they are facing problem with their eyes. So in that case they are going to consult a eye specialist, that is ophthalmologist. Next one is orthodontist. Then who is orthodontist? Orthodontists are the persons or the doctors that you are going to consult if you are having any problem regarding your teeth, jaw or gums. Okay, अगर teeth, jaw या gum में किसी भी तरह की कोई problem है, then you are going to consult a orthodontist. Okay, in the general language we call them as dentist, but their actual name is orthodontist. So हम इनको क्या बोलते हैं? Orthodontist. The next one is the dermatologist. The dermatologists are the doctors that deals with the problems of the skin. If someone is having the problem with their skin, they are going to consult a dermatologist. ओके, सो किसी को अगर स्किन की कोई प्रॉब्लम है तो वो किसके पास जाएंगे? डर्माटोलॉजिस्ट के पास. नेक्स्ट इज द लास्ट वन इज कार्डियोलॉजिस्ट. ओके, सो कार्डियोलॉजिस्ट दे डील्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ chest. If someone started feeling uneasiness, especially in the old people, you will see this problem that they suddenly start feeling uneasy. Okay, उनको थकावट सी फील होनी शुरू हो जाती है. Sometimes they feel pain in their chest. Okay, so in that case, so you must consult a cardiologist. Okay, so these are the answers from question number 1 to 5 of page number 43. Okay, so you can just pause the video here and write down the solution, write down the answers. Okay, now moving next to the next topic,
that is given at page number 59. That is food pyramid. Okay, so that food pyramid is given at page number 59. Okay, so I'll just change the topic, that is food pyramid. Okay, food pyramid given at page number 59. Food pyramid. FOOD food pyramid. PYRAMID. What given at page number 59. So what is food pyramid? Okay, you know, for keeping our body healthy we need a balanced diet. अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए या हमारी बॉडी को हर तरह की डाइट की जरूरत है, वेदर इट्स फैट्स, वेदर इट्स कार्बोहाइड्रेट्स, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड, बट इट शुड बी इन एडिक्वेट क्वांटिटी. सो हर चीज एक बैलेंस डाइट में होती है. ओके, सो एक बैलेंस डाइट मीन्स द डाइट दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग लाइक proteins, vitamins, carbohydrates, fats, water, minerals. Okay, so all these things are included in a balanced diet. So एक balanced diet में सब कुछ include होता है, that is required to get all the nutrients in the body. So that is known as all the balanced diets or the minerals or the foods. Okay, सो देर आर सर्टेन फूड आइटम्स जिसमें कि हमें कोई भी जो वो पर्टिकुलर फूड जो हमारा फूड का वो व्हाट वी कॉल इट, मतलब वो फूड का वो चीज प्रेजेंट होती है. I'm not getting the word exactly. That nutrients is or the nutrients or the vitamins is required. So every food has its own nutrients and the उसके constituents होते हैं जो उसके हर food में कुछ ना कुछ present होता है. So for that we need a proper balanced diet so that there should be proper wearing and tearing of our body. Okay, and हमारी body को जिस जिस चीज़ों की ज़रूरत है, देखिए every food nutrient is required for a particular part of body. ठीक है, जैसे हर body part के लिए कुछ ना कुछ ज़रूरी है. कहीं कहीं हमें विटामिन चाहिए किसी बॉडी पार्ट की ग्रोथ के लिए, किसी के लिए हमें मिनरल्स चाहिए, किसी के लिए हमें फैट्स चाहिए, विटामिन सब कुछ चाहिए, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड. दैट डजंट मीन कि फैट्स बुरे होते हैं तो हमें इसे खाना नहीं चाहिए. नो, तो फैट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो वी शुड इंक्लूड दैट इन आवर डाइट एज वेल. ओके, so these are there is a food pyramid as you can see in the picture. Okay, so in the question as you can see the food pyramids, the 4 blanks are given and you have to write down that if which food is rich in which nutrients. इसके अंदर कौन सा food nutrient है. Okay, so that means कि ऊपर ये first वाले में क्या है, second 3 4. Okay, so there is a pyramid is given like this. I'll just draw it. Okay, I'm not going to draw the food items. I'm just going to draw a blueprint like this. Okay, and it is divided into the 4 parts, 1 2 3 and 4. In the 4 part it is written, this is the first one, then it is the second one is given, then the third one is also there and the fourth one is also given. So these are the 4 food nutrients that are given. Okay, so I'm just going to tell you that कौन सी food nutrient में क्या होता है. Okay, so देखिए in the first you can see the picture of cold drink is there, cold drink, salt, ketchup, french fries, ice cream, chocolates. So all these food items include, इसमें क्या होता है, in this you will find fats. तो इन सब food items में जैसे कि cold drinks हो गई, फ्रेंच फ्राइज, मतलब जो डीप फ्राइड होती है, जो फ्राइड चीजें, जो फास्ट फूड स्पेशली. सो ऑल द फास्ट फूड दे इंक्लूड फैट्स. ओके, जितने भी फास्ट फूड होते हैं उनके अंदर क्या होता है, फैट्स होता है. सो दिस कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट्स, आइसक्रीम, ओके, एंड फ्रेंच फ्राइज, दिस ऑल इंक्लूड्स फैट्स. इन सब में क्या होता है, फैट्स. FATS, they all includes fats. They all include fats. Okay, so these all items they include fats. All the fast food items they include fats. Second one, milk,
curd, cheese, fish and meat. You can see the meat also is there, fish is there, egg is there. Okay, there are certain other meats also. So the meat, milk, curd, cheese, all these things they include proteins. So इन सब में क्या होता है? Protein. The protein is in excessive quantity in these all these food items. So अगर if your body need proteins, if the doctor tells कि that आपको protein चाहिए, protein mostly that protein is useful for the bones. तो bones के लिए protein is very necessary. So you have to include if you want to make your bones strong. So for that you have to include protein in your diet. For that you have to drink milk, you have to eat cheese, okay, and cheese is there, curd is there, okay, and okay, cheese, curd, and what is it, meat is there, the different kind of meats, eggs ho gaye, fish, it can be any meat, okay. So all these food items they include proteins. They are constituents of protein. Okay, so if you want to include protein in your diet, you need to eat them. Protein, Protein. That is protein, Protein. So all the non-vegetarian foods जैसे कि हम इसको मीट वगैरह होता है, इसमें क्या होता है? प्रोटीन. Okay, next one. Okay, in the third pyramid you can see the fruits and vegetables. There are different kinds of fruits and vegetable you can see here. Okay, in the fruits you can see watermelon is there, apricot, strawberry, cherry, and lychee is also there, and watermelon, apple. Okay, and in the vegetable, cauliflower, brinjal, eggplant, and tomato, and ये जिसको शिमला मिर्च बोलते हैं, कैप्सिकम, cauliflower, broccoli. So all these food items they include vitamins. So that means fruits and vegetables they include vitamins. इसमें क्या होता है? Vitamins होता है. Okay, so all the fruits and vegetables they include vitamins. So on this you will find vitamins. VITAMINS. So all the fruits and the vegetables they include vitamins. इसमें क्या होता है? Vitamins. Okay. The last one is, okay, in the last you can see the wheat. Okay, mostly dry fruits. You can see the dry fruits in this. In the last picture you will find the dry fruits especially. Okay, the cereals are there, pulses are there, and bread is there, whole grain bread. Okay, and flour, maize, barley, and there are certain nuts. Okay, so जिसमें mostly आपको देखिए जो last है उसमें आपको क्या दिख रहा है? Mostly the nuts are there, the या cereals हैं या तो dry fruits हैं. So all these food items they include carbohydrate. इसमें आपको क्या मिलेगा? Carbohydrates. So that is carbohydrates. CARBOHYDRATES. That is carbohydrates. Okay, so these are the 4 food nutrients that you will find in the different kinds of food. The first one is the fats, second is the protein, third is vitamin, and the fourth is the carbohydrate. Fats आपको किसमें मिलेगा? You will find fats in the junk food. So especially in the junk foods you will find the fats only. Okay, जैसे कि आप Domino's वगैरह and Pizza Hut and मैकडी वगैरह जाते हो तो वहाँ पे जितने भी बर्गर पिज्जाज बोलते हैं ये सब these all are junk foods and they include fats in it. Second is proteins. Proteins mean all the healthy food items like milk, curd, cheese, and meat, egg, fish, eggs. All these items they include. इसमें क्या होता है? इसमें क्या पाया जाता है? इसमें प्रोटीन पाया जाता है. And the protein is very necessary for the growth of your bones. तो अपने bones की growth के लिए protein is very necessary. Third is the vitamins. Vitamins, okay, the vitamins can be found in the all the fruits and the vegetables. कोई भी fruits या vegetable होंगे उसमें आपको कोई ना कोई किसी न किसी तरह का
विटामिन मिलेगा, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के, ए, बी, सी, डी, ई एंड के. तो देर आर 6 टाइप्स ऑफ विटामिन जो कि अलग अलग जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं. द लास्ट वन इज द कार्बोहाइड्रेट्स. सो कार्बोहाइड्रेट्स में क्या आते हैं, सारे नट्स, ओके, सारे नट्स होंगे, ड्राई फ्रूट्स होंगे, सीरियल्स होंगे, पल्सेस होंगे. So all these they include carbohydrates, and you know the carbohydrates are very important, okay, in our diet. One of the very important nutrient that we should include more in our diet. जितने ज़्यादा carbohydrates होंगे उतनी ज़्यादा आपकी body मतलब active रहेगी, okay. So these are the various food items, okay. So this was our today's session class. So with this I am just ending the session here only. So I'll see you again very soon in our next session. So till then everybody have a good day.